Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. Welcome back in another informative video. So this video was too much requested, so I thought I should get a time from my busy schedule just in case to make this. So आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ लिया होगा, which is about कि प्री-CAS इंटरव्यू किस टाइप के क्वेश्चंस पे बेस करता है, यानी आपसे क्या क्या पूछ सकती है यूनिवर्सिटी। तो जो लोग यूके आ रहे हैं तो मैं उनके प्री-CAS इंटरव्यू का शायद अच्छे से जवाब दे सकूं, बाकी कंट्रीज़ का आई है लिटरली हैव नो आइडिया अबाउट दैट। तो मेरी जो यूनिवर्सिटी थी और यहाँ पे यूके की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी जो है उनके मोस्ट प्रोबेबली सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी वो आपसे 2 क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी वो आपसे 3 पूछते हैं, कभी बहुत सारे भी पूछ सकता है। इट डिपेंड्स कि अगर उनको आपकी कुछ ही क्वेश्चन से सेटिस्फेक्शन मिल रही है, सो दे लाइक ओके फाइन, वी डोंट नीड टू go further or in deep with the details and all. तो अच्छा, अब without wasting time let me tell you about the questions जो कि मुझसे पूछे थे और जिनकी प्रिपरेशन मैंने की थी। सबके सब मुझसे नहीं पूछे गए थे, there were only few of them, but I'm going to tell you all जिनकी मैंने प्रिपरेशन की थी। लकीली मुझे अपनी नोटबुक में वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मिल गए थे, जो कि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग आई रेड देम ऑल एक साथ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि भाई व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ। दैट इज़ टू इम्पॉर्टेंट, जो कि मुझे अब जाके रियलाइज़ हुआ। आई एम स्पीकिंग बहुत ज़्यादा स्लो जस्ट बिकॉज आई एम सिटिंग इन द लाइब्रेरी, और बाकी कहीं बैठ के वीडियो बनाओ तो काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शन वॉइसेस आ रही होती हैं बैकग्राउंड में, सो दैट्स वाई you guys need to adjust, or maybe I think it's too quiet here, so it won't bother you. So second question was which course you are enrolled in. So make sure before your CAS you need to prepare yourself with all the required information, in which degree you are enrolling yourself, in which university you are going, at which rank that university is in among the all universities of UK. तो मेरी यूनिवर्सिटी किस रैंक पे थी और मैंने कौन कौन सी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ लाइक की थी। माई क्वेश्चन वॉज लाइक कौन से कोर्स में आप एनरोल्ड हैं। आई वॉज लाइक MSc डिजिटल मार्केटिंग। तो ओके, वाई दिस कोर्स, वाई दिस मॉड्यूल, वाई डोंट एनी अदर। सो दिस वॉज द क्वेश्चन, मतलब क्रॉस क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अंदर से एक और क्वेश्चन। सो आई वॉज लाइक बिकॉज माई इंटरेस्ट वॉज इन दिस फील्ड, सो maybe that was the reason I enrolled myself in this. And इसके अलावा कोई क्वेश्चन आता है तो वो है describe your academic profiles, like the latest degree, from where you have got that degree and all. So you just have to introduce your academic profile in front of the interviewer, doesn't matter कौन आपके सामने lady or a man. So that's it. डिग्री तो सबको याद होती है, यू जस्ट नीड टू टेल द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड द रिस्पेक्टेड डिग्री जो कि आपने वहाँ से की होती है, दैट्स इट। उसके अलावा वाई एक्चुअली यू चूज़ UK, वाई नॉट एनी अदर कंट्री। सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट नीड्स टू बी आंसर वेरी क्लेवरली, लाइक यू नीड टू इम्प्रेस विथ योर वर्ड्स। सो इस क्वेश्चन में मैंने बताया था कि मेरा जो था वो ड्रीम था UK आके पढ़ना, तो दैट वाज द रीज़न दैट पुश्ड मी टुवर्ड्स सेलेक्टिंग इट एंड फॉर नॉट एनी अदर कंट्री। प्लस आई डू लाइक द एटमॉस्फेयर हेयर, एक्सक्यूज़ मी। तो ये सारे रीजंस थे, प्लस वेदर हेयर इज़ लाइक माई फेवरेट वन। आई लव रेनी सीजन एंड इट्स क्वाइट like it's all about the imagination. I have always dreamed of like I will be in a country during my master's program जहाँ का वेदर ऐसा होगा, जहाँ पे ऐसे होगा वैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने इन अ फॉर्म ऑफ स्टोरी उनको बताया था इन एन आंसर। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन डिटेल्स नहीं थी, बहुत ब्रीफ सा था, लेकिन बहुत क्लियर पॉइंट्स थे। उसके बाद आता है व्हाट डिफरेंसेस डिड यू फाइंड, लाइक वाई UK, वाई नॉट योर होम कंट्री। अच्छा, पहले कंपैरिजन होता है विद एन अदर कंट्री, फिर होता है आपके होम कंट्री के साथ। तो माई आंसर वॉज लाइक द रीज़न बिहाइंड नॉट सेलेक्टिंग माई होम कंट्री वॉज के मे बी एजुकेशन सिस्टम और मे बी रिकगनाइज वाली जो बात आ जाती है, बिकॉज डजेंट मैटर कि वो आप जो है वो कोई भी डिग्री करते हैं। अब
हर किसी के होम कंट्री की बात अलग होती है. लाइक आई बिलोंग टू पाकिस्तान, तो वहाँ का हायर एजुकेशन सिस्टम इज़ क्वाइट गुड. बट यूके की अगर आप डिग्री लेते हो तो इस वर्ल्ड रिकॉग्नाइज, यानी कि उसके लिए आपको किसी वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. सो दिस वॉज माई रीज़न कि वर्ल्ड रिकॉग्नाइज डिग्री चाहती थी मैं अपनी मास्टर्स की. पाकिस्तान की मास्टर्स की डिग्री से कंपेयर तो नहीं करी, लेकिन आई जस्ट वॉन्टेड टू प्रूव माई पॉइंट. सो दैट्स वाई आई चूज दीज वर्ड्स. ठीक है. उसके बाद आता है हाउ डिड यू मेक योर डिसीजन फॉर दिस यूनिवर्सिटी जिसका आप इंटरव्यू दे रहे हैं. फॉर सपोज रोहैम्पटन है, अल्स्टर है एंड यूनिवर्सिटी. तो वो डिसीजन आपने कैसे लिया? वो डिसीजन ऐसे लिया कि मेरा जो आंसर था वो ये था. When I was researching like in which university I should apply, so I checked the ranking overall, and of course my financials, like if I could afford the course जो कि मैं लेना चाहती हूँ और नहीं. तो इस तरह से मैंने इस पॉइंट को कवर किया था. and that was like, oh wow, I got that compliment on my answer. so why you choose this degree, ये तो हमने पहले कवर कर लिया I guess. so how will your course be assessed? तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आपको अपने कोर्स से रिलेटेड आपके सारे सब्जेक्ट्स, यानी कि जिनको यहाँ मॉड्यूल्स कहा जाता है, जिनको हम अपने होम कंट्री में कोर्स बोलते हैं, आपको उनका पता होना चाहिए. कितने कोर्सेज हैं, क्या नाम है, कौन पढ़ा रहा है. कौन पढ़ा रहा है याद रखना ज़रूरी नहीं है, बट इट नीड टू मेक श्योर कि आपको पता हो कि हाउ योर कोर्सेज, हाउ योर मॉड्यूल्स एंड डिग्री इज़ गोइंग टू बी असेस्ड. असिस्ट का मतलब एग्ज़ाम बेस्ड है या असाइनमेंट बेस्ड है. अब जैसे मेरा है तो इट इज़ लाइक फाइनल सबमिशंस, असाइनमेंट सबमिशंस, नॉट एग्ज़ाम्स. तो ये मुझे पता था बिकॉज मैंने यूनिवर्सिटी का सारा पोर्टल देखा था. मैंने यूनिवर्सिटी को ऊपर से नीचे तक सारे जब मैं मॉड्यूल्स चेक करी थी. सो आई हैव गॉन थ्रू एवरी सिंगल डिटेल. प्लस सबूर हेल्प मी एंड एड लाइक ही इज़ अ far good researcher than me. So then how do you think your course and previous studies are aligned? अब मैंने किया है बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ आई एम सेलेक्टिंग MSc इन डिजिटल मार्केटिंग. ये किस तरह से मैच कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? तो देयर वाज वन सिंगल कोर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो कि कंपलसरी नहीं था, बट एक्चुअली आई डिड दैट. गलती से मैंने ले लिया था, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था विदड्रॉ का. So I told the interviewer that it made my mind that I should start my career in air, like I should pursue my masters in it because I think that in future इस डिग्री का बहुत ज़्यादा स्कोप हो सकता है. So I have told him a lots of positive points about the degree. So somehow I interrelated that. ठीक है. प्लस हम लोग MSc डिजिटल मार्केटिंग में वी डू लर्न बिजनेस. सो बिजनेस वाली फील्ड तो मेरी ऑलरेडी थी. सो दिस वाज अ मेजर सपोर्टिंग पॉइंट एट दैट टाइम. तो अच्छा, व्हाट आर योर मॉड्यूल्स इन द डिग्री? अच्छा, एक्चुअली आई हैव अ पेपर ऑन विच आई हैव रिटन ऑल द क्वेश्चंस. सो अब काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, सो मुझे देख के पढ़ना पड़ा. तो अच्छा, मॉड्यूल्स जो हैं वो मुझे सारे नहीं याद थे. मैंने बस इंटरव्यू से कुछ टाइम पहले ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे हल्का फुल्का देख लिया था अपना पोर्टल खोल के. तो मुझे कुछ मॉड्यूल्स याद थे जो कि मेरे डिजिटल, यानी कि जैसे मैं बीइंग अ डिजिटल पर्सन, लाइक बीइंग अ सोशल पर्सन, वो थोड़ा सा ट्रिगर कर रहे थे मेरे इंटरेस्ट को. जैसे कि सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर्स, डिजिटल मीडिया इश्यूज़, इमर्जिंग डिजिटल मीडिया ट्रेंड्स. तो ये सारी जो है ना मुझे याद हो गए थे. तो आई टोल्ड दैम these names to the interviewer, and he asked more, but I told him that I actually do not remember the names, but I do know about them. If you will ask anything about the module, I will let you know. So he was like, okay, that's okay. So next question was, how much is your yearly tuition fees and how much scholarship do you get? तो क्योंकि रिसर्च करनी है आपको अपनी हर चीज़ से रिलेटेड, सो यू हैव टू रिमेंबर कि आपकी कितनी टोटल ट्यूशन फ़ीस जो है वो आप पे कर रहे हैं, कितनी आप इनिशियल डिपॉजिट वहाँ से पे करके आ रहे हैं, कितनी यहाँ आके करेंगे, आपके क्या प्लान्स हैं, और यूनिवर्सिटी ने आपको कितनी पे करने के लिए बोला है. जो आपके पास सारी रिसिप्ट्स होंगी वो आपको संभाल के रखनी है. प्लस इंटरव्यू आपका कैस लेटर से पहले भी हो सकता है और कैस लेटर के बाद भी होता है. आई डोंट नो, मेरा तो बहुत पहले ही हो गया था जब उन्होंने मुझे ऑफ़र इशू की थी एट दैट टाइम. और रहा सवाल स्कॉलरशिप का, तो स्कॉलरशिप मुझे मिली थी £4,000 की, जो कि यूनिवर्सिटी ने दी थी. तो इंटरव्यूअर एक्चुअली आस्क मी
मतलब वो चेक कर रहा था कि इफ़ आई एम डिस्प्लेइंग द राइट इन्फॉर्मेशन और नॉट. तो उसने मुझसे पूछा कैन यू शो मी. तो आई टोल्ड हिम येस ऑफ कोर्स आई हैव ऑल द डिटेल्स इन माई फ़ोन. लाइक यूनिवर्सिटी व्हेन आई शूट द ऑफर लेटर, तो उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था दैट यू आर गेटिंग स्कॉलरशिप ऑफ 4,000. So he was like okay I don't need to see that. I was just asking to make sure कि सारी डिटेल्स जो है वो करेक्ट है. फिर did you check accommodation cost? Have you have you known or have you gathered some information regarding the accommodation or have you booked that? So इस तरह का क्वेश्चन होता है, कोई भी इसमें से हो सकता है. So I was like yes I do. I have looked after many websites, plus currently I am thinking about booking an accommodation inside the university, any on campus accommodation. So he was like okay. तो अगर मैं बोलती कि somewhere outside, like in a similar city where university is located, so he must be asking that where can you pronounce the address, or can you tell me that what kind of property is it? Is it rental property, tenancy, contract based or something? So in सब details से बचने के लिए I told him that I am going to have an on campus accommodation, but at that time मेरा कोई plan नहीं था on campus accommodation का. That was just to answer the question. क्योंकि वो सिर्फ आपका confidence level check करते हैं, and they never ask for the detail like show it in front of you and beside you. No, nothing like that. Plus you have to be confident while answering the question. You should not answer the questions like yeah no, not like that. Answers don't explain a lot. Your answer must be small, brief, but it should carry or it should attract the interviewer towards your point. Like you can prove your point in your small sentence. That's it. And other question was how are your studies and annual living cost be funded? Like, who is going to look after that? Because you are a student, if you are running a business, okay, you can, but most of the students, like, they are still not married, not working, they are just carrying their master's degree and their parents are supporting them for that. They are paying their funds and all financials. So उसमें you have to tell the interviewer that your parents are looking after you. Your father, you have to mention, like if your father is running a business or you have some lands and properties, like he owns a piece of land for on which there are lots of crops growing, like agriculture thing happening. So your father is earning, like you have to prove that your father can afford, so you have to prove that at the point. So this how I told him that my father is going to fund my studies. Then a question arose. He asked me that you are married, so are you sure your father is going to support you, not your husband? So I was like yes, my husband is currently studying in my home country, so he is not coming with me right now, and my father is looking forward to fund my studies, as it was his dream that I do masters from any foreign university. So he is just fulfilling that, and that's it. So then he will be asking you that do you know what is your course start date and end date? That must be mentioned on your portal. You should check that. You should read every single description on your portal, just in case कि आप कोई भी miss ना करें, because everything is going to be asked from you. So I do remembered my start date as well as the end date, so I told him. And then he asked that do you know university refund policy? And I told him yeah, I know. Refund policy is actually based on two things: if your visa rejects, or I think when university itself gives you an offer, like you should get a refund, or maybe you should wait for January intake if you are applying in a September one. So in that case maybe there is a refund system. तो मुझे इतना ही पता था, मैंने इतना ही बताया. फिर है have you got any friends or relatives in UK, like settled हो या अभी आए हो? So as मेरा ऐसा कोई ऐसा यहाँ पे रिलेशन नहीं था फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में, तो आई सेड नो. एंड देन द क्वेश्चन वाज योर प्लान्स आफ्टर फिनिशिंग योर डिग्री, like have you planned anything or you were just
I was like, yeah, I do plan after completing my degree I will for sure getting the PSW and for sure find a sponsor job in my field, not in any other field. And then he asked me, it was a cross question. जैसा कि मैंने पहले बताया क्रॉस क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, so you don't have to worry about that. So it was like, okay, so you have work plans here, so are you staying here after your PSW or to in your PSW time period? I was like, yeah, I will be staying in my PSW time period, but I think not more than that. After my visa expired I will get back to my home country, and I will, I will live there because my father have a business settled there. My father-in-law, sorry, father-in-law plus my husband. So I think I am not supposed to live here. I will live there in my home country. Plus I will do a related job just after get back to my home country, and that's it. These are my plans after PSW. But in the time of PSW I will be gaining the professional exposures here by searching or looking forward to job related to my field. So this was my answer. These are the questions that I think if you are going to answer same, you are definitely going to pass the interview. So the next question was, will you stay here in UK and work here? That question is actually जो कि मैं cover कर चुकी हूँ पिछले question में. फिर what business does your father have and how much the monthly income is? ये क्वेश्चन मुझे याद था ऊपर, जो कि मैंने आपको बताया भी है that my father is owning some pieces of lands on which agriculture and on. तो इस तरह की सारी चीज़ें जो थी वो मैंने बताई थी. Plus he is going to ask how much he annually earns, because he needs to make sure that मतलब my father's annual income is that much that he can fully fund my studies plus my expenses. प्लस एक और क्वेश्चन लास्ट जो कि इसमें मेंशन नहीं है और जो कि मैंने भी उसी वक्त आंसर किया था ऑन द स्पॉट, दैट वाज लाइक, डू यू नो दैट हाउ मच योर मंथली एक्सपेंसेस आर गोइंग टू बी व्हेन यू विल बी हियर इन यूके? तो ग्रॉसरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इस तरह के सारे एक्सपेंस मिला के उसको एक फाइनेंशियल एक अमाउंट देना था. तो मैंने बताया था, आई डोंट रिमेंबर मैंने क्या बताया था, बट दैट वाज अराउंड जो होना चाहिए था उसके. आई आस्क्ड माय कंसल्टेंट. तो फिर मुझे, लेकिन अच्छा इंटरव्यू यहीं तक था. मुझसे काफ़ी कम क्वेश्चंस पूछे थे, बट मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐड किए हैं. जैसे क्रॉस क्वेश्चंस थे वो इसमें लिखे हुए नहीं थे, पर मैंने आपको सारी डिटेल्स बता दी हैं. और इंटरव्यू में you just need to put your phone right in front of you, put your headphones and just stay calm, that's it. ये कुछ टिप्स हैं. और मैंने जब अपना इंटरव्यू दिया था, आप जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं मुझे, उनको सदर का पता होगा. So I was in Sadar. There was a lot of traffic. I was stuck in traffic at that time, and literally the situation was too bad. Then we finally found a place under the tree where we just parked the car and my interview just started. So it was a really terrific situation at that time. So but my interview went well and I got lots of compliment from the interviewer. One was on my confidence. Like there were a lot of questions, like I told you that my monthly expense and all. Interview got me, like I have no idea about that, but the moment and the way I just covered the answer of the question, that was lit actually. I'm praising myself, I know, but so this is it. And then he told me to wait for 1 or 2 days and I will be getting an email in which I will get to know that if I passed or failed. Then I wait for 1 day. It was around 12 hours or something. Then I got an email from the university, or maybe it was a CAS or something, I don't remember. Then it was like, congratulations Sonara, you have just passed your pre-CAS interview. And that was a really happy moment for me, because and the situation in which I had given the interview, that was so terrifying. So unexpected actually. So this is my story, like my experience, which I am sharing with all of you, and hope it might help you somewhere. जो लोग जनवरी इनटेक में आना चाह रहे हैं और जो लोग मुझसे अलग अलग पूछ रहे थे उनके लिए भी. तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू. एंड डोंट वरी, अगर एक
बार में नहीं होता दूसरी बार में हो जाएगा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है और वैसे हो जाता है। प्लस मेक श्योर कि अच्छा एक चीज़ और जो मुझे अभी याद आई है, दैट इज़ थिंग्स रिलेटेड टू योर यूनिवर्सिटी, लाइक वेयर इज़ योर यूनिवर्सिटी लोकेटेड। मेरी वाइट लैंड्स में थी, आई डोंट नो किधर थी, तो ये मुझे उस वक्त पता नहीं था, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, तो मैंने उनको बताया था कि माई यूनिवर्सिटी इज़ एट नियर दिस पोस्टल कोड, और maybe I told them that there is a Digpais toward or Southland College near the university. There's a more garden area and all. I gave them the description जो कि मुझे थोड़ी थोड़ी याद थी, क्योंकि मैंने उनका पूरा जब when I was visiting at the time of applying for the university, so मैंने उनके पोर्टल पे सारी छोटी छोटी डिटेल्स देखी थी, लाइक फ़ीस फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, फ़ीस फॉर द लोकल रेजिडेंट्स हेयर, सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन दैट। तो ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में रह गई थी। इट्स ऑल अबाउट द रिसर्च। प्लस यूनिवर्सिटी इज़ गोइंग टू आस्क कि आपने कोई और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट नहीं की, वाई, और हैव यू शॉर्ट लिस्टेड एनी अदर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसके। सो आई टोल्ड देम यस, आई डिड अप्लाइड इन 2 more universities except this Roehampton. So they were like, which one? So I was like, Kingston and Bedfordshire. Then they asked me that why not those universities, why this? So फिर I told Roehampton that in ranking, when I checked the ranking, so Roehampton was at like अपर प्लेस इन, मतलब रैंक में उसका रैंक ज़्यादा था और बाकी जो थे वो थोड़ा लोअर रैंक थे। प्लस एक यूनिवर्सिटी से मुझे ऑफ़र लेटर नहीं आई थी, लेकिन एक से आ गई थी। तो आई चूज़ रोहैम्पटन जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स रैंकिंग एंड द एनवायरनमेंट इन साइड। और मैंने रोहैम्पटन के बारे में काफ़ी रिसर्च की थी, तो आई गॉट टू नो दैट द कल्चर हेयर इज़ वेरी फ्रेंडली एंड एनवायरनमेंट इज़ टू फ्रेंडली, एवरीवन इज़ लाइक सो काइंड। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताई थी। ये वो क्वेश्चन था जो मेरे अचानक से माइंड में आए। तो आई थिंक आई नीड टू एंड दिस वीडियो हेयर बिकॉज इट हैड बिकम टू वाइड, टू लॉन्ग। सो होप किसी न किसी के काम ज़रूर आएगी, जिसके काम आएगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। जो वीडियो आप लोगों ने नेक्स्ट रिक्वेस्ट की है फॉर श्योर वही आएगी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।